Hi students, welcome to my channel Big Education. So today we are going to continue our topic जो हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में रिमेन रखा था उसको कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Pramila Dandwade established the Mahila Dakshata Smiti in Delhi in 1976. Branches of the Smiti came up in the state of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Punjab. The Communist Party established the Akhil Bharatiya Janavadi Mahila Sangathan in 1980. Efforts were made to start branches of this organization in all parts of India. The Sangathan started a struggle against issues like dowry, female foeticide, domestic abuse. Research on women's issue was undertaken at various levels. Women's Studies Center were started at the first Women's University, the Srimati Natinbai Damodar Tharkesi SNDT Women's University Mumbai, and at Tata Institute of Social Science Mumbai, Savitribai Phule Pune University Pune and Shivaji Maharaj University Kolhapur. These centers played an important role in critical analysis in developing a vision of a woman. So जितने भी यहाँ पे सेंटर्स के नेम दिए थे वो सेंटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था वुमेन के साथ स्टैंड लेने के लिए. Laws of Women. The law enacted in 1952 reorganizing women's right to alimony and their share in the father's property. And ये मूवमेंट क्यों इस मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया था ताकि वुमेंस को अगर वुमेंस का डाइवोर्स हो जाता है देन उनको प्रॉपर हक मिलना चाहिए 50-50% उनको एंड हस्बैंड को एलिमनी हर मंथ देनी चाहिए एंड फादर की प्रॉपर्टी में भी उसको 50% उसका शेयर मिलना चाहिए. Her right to Sridhan was recognized. Polygamy was made illegal and women just like men got the right to sue for divorce. And if अगर women को नहीं रहना अपने husband के साथ किसी issue की वजह से या उसकी खुद की problem की वजह से then उसको भी right है कि वो divorce ले सके. It was a law that looked one step forward concerning women issue over the following decade. The Dowry Prohibition Act of 1961 made both giving and taking of dowry a congeniable criminal offence. This dismantled the dowry tradition by its root and further encouraged the social movement. The law alleviated the distress to women caused by the undesirable tradition of dowry. The Maternity Benefit Act, which gave women the right to get leave from work at the right time of childbirth, also came into force in 1962. मीन्स इस एक्ट में क्या था कि वुमेन्स को बर्थ से ही उनका हक और उनके राइट्स मिल जाने चाहिए. Awareness against the dowry tradition. Even after the enactment of the anti-dowry law, incidents like women burns to death as Sari Paulu catches fire while cooking and woman slips into well while washing clothes, drones and dyes continue to up reported. Investigations still reveal dowry to be the most frequent cause of such deaths. The role of police, the administration and judiciary were highlighted. This created greater awareness. As a result, the Dowry Prohibition Act came into force in 1984. In 1988, 2009, women died victim to the Victory tradition. In 1990, the number of dowry deaths were 4,835 and in 1993, it was 5,377. This number will impress upon the seriousness of issue. एंड डाउरी सिस्टम में धीरे धीरे डाउरी लेने की जो सिस्टम थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. एंड यहाँ पे बताया है कि कौन से साल में कितनी डाउरी की सिस्टम बढ़ी है. सो 1988 में 2209 वुमेन्स डेथ हुई सिर्फ डाउरी की वजह से. एंड उसके बाद 1990 में डेथ की जो नंबर्स थे वो और इंक्रीज़ हो गए जो 4,835 पे हो गए. एंड इन 1993 इट वाज 5,377. तो आप सोच सकते हैं कि डाउरी की वजह से वुमेन्स कितनी वुमेन्स की डेथ हो चुकी है. फैमिली कोर्ट वे एस्टैब्लिश्ड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग
out of differences with marriage and domestic problems as well as issues such as alimony, single parenthood, separation. So फैमिली कोर्ट इशू को एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? बिकॉज मैरिज के बाद अगर उन पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आइदर उनको एलिमनी की कोई प्रॉब्लम होती है, या सिंगल पेरेंटहुड है, उनके फादर नहीं है, या दोनों में सेपरेशन हो चुका है, इसके वजह से केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड ओनरशिप विच आर ऑल रिलेटेड टू फैमिली सिचुएशन, जो भी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन रहती थी उसके लिए फैमिली कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था. दिस फैमिली कोर्ट गिव प्रायोरिटी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर विटनेस एंड एविडेंस एंड टू काउंसलर ओवर लॉयर्स. सो इसमें क्या विटनेस को ज़्यादा उन पे ज़्यादा उनको ज़्यादा अंडरस्टैंड करके उनके एविडेंस लेके मतलब फैमिलीज़ कोर्ट में क्या रहता था ना कि मीन्स उनके जो भी एविडेंस रहते थे, आइदर उन पे कुछ भी टाइप का स्ट्रगल हो रहा है या किसी भी टाइप का वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन उनसे रिलेटेड ही वहाँ पे लड़ा जाता था केस. एम्फेसिस इन ऑन रिजॉल्विंग इशू क्विकली बट जस्टिली. Trial involving alimony, a fixed amount paid to married woman for the unkept by the husband who had divorced her, is called alimony. Alimony किसको बोलते हैं कि फिक्स्ड मनी जो उसको हर महीने उसके हस्बैंड को देना है, वो फिक्स मनी है, उसको एलिमनी बोलते हैं, डाइवोर्स होने के बाद जो हस्बैंड उसको देगा. इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह Banu Begum, the Supreme Court gave the verdict that Shah Banu Begum had the right to alimony. However, religious organization protest ferociously against the verdict. As a result, the Muslim Women Act was passed by Parliament. And Muslim women में भी ऐसा सिस्टम होता था कि वो भी एलिमनी ले सकती हैं अपने हस्बैंड से, बट उन लोग उतना उस चीज़ को नहीं रिस्पेक्ट करते थे. दैट्स वाई पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेंस के लिए भी एक्ट निकाला, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट. On 4th September 1987, Rup Kanwar, a married woman, committed sati. She did not do this of her own free will. She was concerned with doing so. Committing sati, glorifying the practice of sati, were all an illegal act. The women activists and journalists Meena Menon, Geeta Sheshu, Surajata Anandan, Anu Joseph and Kalpana Sharma investigated the case. In 1988, the government passed the Sati Prevention Act with a stringent provision. So, सती प्रोविजन का एक्ट उन्होंने इस्टेब्लिश किया कभी 1988 में. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट. In 1993, the law was enacted to prevent injustice to man and woman. The National Human Rights Commission was also formed for this purpose. In some states, the State Human Rights Commission was also formed on the same line. This law, which deals with collective operation that social condition of diverse women and insecure workplaces played an effective role in the mitigating injustice to women. So ये ह्यूमन राइट का एक्ट क्यों एस्टैब्लिश किया था? बिकॉज वुमेन या मैन दोनों में से किसी को भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, देन वो उस कमेटी में जाके अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं. Reservation for women. The 73rd and 74th Amendment to the Constitution provide the reservation of one third of the seat of women in Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Jila Parishad, municipalities and municipal corporation, as well as for the post of Sarpanch, Chairman and Major. Maharashtra and 15 other states have reserved 50% seat for women. This provision provided women the opportunity to participate in the business of the committee. अगर किसी भी वुमेन को पॉलिटिक्स में आना है, इफ़ उनको किसी भी चीज़ के लिए मीन्स उनको पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना है, इधर उनको भी अपना पॉलिटिक करियर एस्टैब्लिश करना है, देन वुमेन्स के लिए 50% रिजर्व सीट्स पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में वुमेन्स के लिए 50% सीट रिजर्व थे.
In the post-independence period, the Constitution of India adopted the principle of equality of man and woman. Hence, women got the important political right to vote. Women got equal right to education and work on par with men. Inhuman practices like sati dowry and polygamy were banned by law. Women's right to share for divorce was recognized. They got a lawful share in property in local self-government bodies. Seats were reserved for women so that they would have their share of political power. We see today that due to this provision, women have begun to get education and to earn. Also, due to ideas of women liberalization, women are developing a sense of self. They are begin to participate enthusiastically and with determination in all field of education, earning money, administration, political, etc. And women वुमेन को बहुत सारे चीज़ों में अपना हक मांगने की भी मतलब उनको फ्रीडम मिल चुकी थी कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें एंड पॉलिटिकल करियर भी अपना बना सकें एंड उनको राइट था कि वो भी जाके वोट कर सकें शेड्यूल caste. In the post-independence period, our constitution adopted the value of freedom, equality, fraternity, and social justice. In accordance with the participate of untouchability was banned by law. Untouchability was removed by 17th paragraph of constitution, and this clause was included in the scheduled caste. In view of the educational and social backward of scheduled caste, they were began reservation in education as well as jobs to facilitate their development. So शेड्यूल कास्ट में कैसा प्रॉब्लम था ना कि उनको अनटचबिलिटी मतलब ऐसे तुम लोअर कास्ट के हो तो तुम हम अपर कास्ट वाले को छू नहीं सकते, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, ऐसे टाइप का उस टाइम पे सिस्टम चलता था. बट उस सिस्टम को हटा दिया गया एंड उसके बाद 17 पैराग्राफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया. शेड्यूल ट्राइब जस्ट लाइक द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब और Adivasis who live in the remote part of the country also face several difficulties as they have life away for the progress made in modern times. They are economically and socially backward. Even though their conditions have been some improvement in recent times, they do not have any means of livelihood other than agriculture and forest produce. Modern farming implements have not yet reached them. Hence, their income for agriculture is very small. Besides, their fields are on hillside and not fertile. They are malnourished due to insufficient and poor quality of diet. Adivasis in remote area find it difficult to get medical attention in time. For all these reasons, there is a need to give special protection to Adivasis. In the Indian Constitution, Adivasi have been enumerated as scheduled tribes. They are getting given representation in the law, board, education, government, service, etc. सो जैसे कि शेड्यूल कास्ट में भी वैसे था कि हमारा कास्ट अच्छा है तो हम किसी को टच नहीं कर मतलब छोटे कास्ट वाले हमें टच नहीं कर सकते. तो वैसे शेड्यूल ट्राइब्स में भी था कि आदिवासी लोगों को उनका प्रॉपर हक नहीं मिलता एंड उनको जो मिलना चाहिए फ्रीडम उस टाइप का नहीं मिलता, इसीलिए उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था. Nomadic and denomadic tribe. Caste and tribes that move from place to place are a livelihood are included under nomadic tribe. They live by rearing animal and engaging in some other occupations. The British has declared some of them as criminal tribes in the law of 1871 to curb crime. Some of the main groups were mentioned as criminal tribes and their occupations and movement were banned. This unjust law was replaced in the post-independence period and the curb on these tribes were lifted. They were included under denotified tribes. Special efforts are made by the government for the purpose of their social and economic development. This tribe has been given representation in educational institute and government sector. So उस टाइम पे कैसा होता था ना कि ब्रिटिश की जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे तो उन्होंने कैसा कहा था कि कोई कास्ट ऐसी होती है मीन्स जिनको उन लोग एज अ क्रिमिनल कास्ट डिक्लेयर कर देते थे. सो उस टाइम पे
नोमेडिक एंड डी नोमेडिक ट्राइब्स होते थे जिनको प्रॉपर हक नहीं मिलता था, सो उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। माइनॉरिटी in any society, a group of people of particular religion, language, or race who are few in number are termed a minority, as there are various religious sects and languages in our country. We can see great cultural diversity. There is variation in cultural tradition too. In order to preserve their cultural tradition and develop their own languages, the Constitution gives the citizens certain educational and cultural rights. Minorities have to the right to protect and conserve their languages, culture, and tradition. For this purpose, they have the right to set up separate educational institutions. The government implements various schemes for this purpose. सो माइनॉरिटीज़ में क्या होता था ना कि मीन्स लैंग्वेजेस आइदर रिलीजन, उसमें माइनॉरिटीज़ होते थे एंड इस चीज़ों को डेवलप करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। इन नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न about the progress in India had made the field of science and technology in the post-independence period.